नमस्ते माय YouTube फैमिली, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। तो हम क्या सुन रहे थे अभी घर से जिम्नास्टिक तक? महाभारत, भगवत गीता। भगवत गीता। हाँ, तो ये हम हर रोज का है कि हम घर से स्कूल आते हैं, मैं और नव्या में ड्राइव करती हूँ, यहाँ पे स्टैंड पे फोन लगाती हूँ और हम भगवत गीता के अलग अलग अध्याय सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, एज स्पिरिचुअल लाइक हमारी खोराक है, राइट। ऐसा कुछ भी आपको जिसमें श्रद्धा हो आप वो सुनिए। बच्चों को भगवत गीता बहुत अच्छा लगता है अगर आप पहले से उसको ये हैबिट करो ना, तो क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवत गीता में जो है वही सारी दुनिया में है, महाभारत में है वो, और महाभारत में जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपको सनातन धर्म पे श्रद्धा है, क्योंकि आदि अनंत है ये, तो आप जरूर भगवत गीता को अपने आचार व्यवहार और जीवन शैली में अपनाइए, जो कि हम कर रहे हैं। इसके हमारे लाइक मेरे जितना भी मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है उससे मैं कह रही हूँ, आपको मन की शांति, आध्यात्मिक प्राप्ति होगी। और ये हमारी छोटी छोटी बच्ची को भी बहुत अच्छा लगता है भगवत गीता। नव्या ने गवन भगवत गीता। चलो टाइम થઈ ગયો बेटा, जिम्नास्टिक रो। ओके The whole community, all blood relatives of Arjuna, had come to fight with him. This overwhelmed a kind devotee like Arjuna. Although it is not mentioned here, still one can easily imagine that not only were Arjuna's bodily limbs quivering and his mouth drying up, but that he was also crying out of compassion. Such symptoms in Arjuna were not due to weakness, but to his soft-heartedness, a characteristic of a pure devotee of the Lord. It is said, therefore, Yasyasti Bhaktir Bhagavatya Kinchana Sarvair Gunastra Samasate Sura Harava Bhaktasya Kuto Mahad Guna Mano Rate Nasati Davato Bahi. One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the good qualities of the demigods. But one who is not a devotee of the Lord has only material qualifications that are of little value. This is because he is hovering on the mental plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. Verse 29. My whole body is trembling and my hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. Report. There are two kinds of trembling of the body and two kinds of standings of the hair on end. Such phenomena occur either in great spiritual ecstasy or out of great fear under material conditions. There is no fear in transcendental realization. Arjuna's symptoms in this situation are out of material fear, namely loss of life. This is evident from other symptoms also. He became so impatient that his famous bow Gandiva was slipping from his hands. And because his heart was burning within him, he was feeling a burning sensation of the skin. All these are due to a material conception of life. Verse 30. I am now unable to stand here any longer. I am forgetting myself and my mind is reeling. I foresee only evil, O killer of the Keshi demon. Report. Due to his impatience, Arjuna was unable to stay on the battlefield, and he was forgetting himself on account of the weakness of his mind. Excessive attachment for material things puts a man in a bewildering condition of existence. Bhayam Dvitiya Bini Veshata. Such fearfulness and loss of mental equilibrium take place in persons who are too affected by material conditions. Arjuna envisioned only unhappiness in the battlefield. He would not be happy even by gaining victory over the foe. The word nimitta is significant. When a man sees only frustration in his expectations, he thinks, why am I here? Everyone is interested in himself and his own welfare. No one is interested in the Supreme Self. Arjuna is supposed to show disregard for self-interest by submission to the will of Krishna, who is everyone's real self-interest, and therefore suffers material pains.
Arjuna thought that his victory in the battle would only be a cause of lamentation for him. Verse 31. I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. Purport. Without knowing that one's self-interest is in Vishnu, or Krishna, conditioned souls are attracted by bodily relationships, hoping to be happy in such situations. Under delusion, they forget that Krishna is also the cause of material happiness. Arjuna appears to have even forgotten the moral codes for a Kshatriya. It is said that two kinds of men, namely the Kshatriya who dies directly in front of the battlefield under Krishna's personal orders, and the person in the renounced order of life who is absolutely devoted to spiritual culture, are eligible to enter into the sun globe, which is so powerful and dazzling. Arjuna is reluctant even to kill his enemies, let alone his relatives. He thought that by killing his kinsmen there would be no happiness in his life, and therefore he was not willing to fight, just as a person who does not feel hunger is not inclined to cook. He has now decided to go into the forest and live a secluded life in frustration. But as a Kshatriya, he requires a kingdom for his subsistence, because the Kshatriyas cannot engage themselves in any other occupation. But Arjuna has had no kingdom. Arjuna's sole opportunity for gaining a kingdom lay in fighting with his cousins and brothers and reclaiming the kingdom inherited from his father, which he does not like to do. Therefore, he considers himself fit to go to the forest to live a secluded life of frustration. Verses 32. O Govinda, of what avail to us are kingdoms, happiness, or even life itself, when all those for whom we may desire them are now arrayed in this battlefield? O Madhusudana, when teachers, fathers, sons, grandfathers, paternal uncles, fathers-in-law, grandsons, brothers-in-law, and all relatives are ready to give up their lives and properties and are standing before me, then why should I wish to kill them? O maintainer of all creatures, I am not prepared to fight with them, even in exchange for the three worlds, let alone this earth. Purport. Arjuna has addressed Lord Krishna as Govinda because Krishna is the object of all pleasures for cows and the senses. By using this significant word, Arjuna indicates what will satisfy his senses. Although Govinda is not meant for satisfying our senses, if we try to satisfy the senses of Govinda, then automatically our own senses are satisfied. Materially, everyone wants to satisfy his senses, and he wants God to be the order supplier for such satisfaction. The Lord will satisfy the senses of the living entities as much as they deserve, but not to the extent that they may covet. But when one takes the opposite way, namely when one tries to satisfy the senses of Govinda without desiring to satisfy one's own senses, then by the grace of Govinda, all desires of the living entity are satisfied. Arjuna's deep affection for community and family members is exhibited here, partly due to his natural compassion for them. He is therefore not prepared to fight. Everyone wants to show his opulence to friends and relatives, but Arjuna fears that all his relatives and friends will be killed in the battlefield, and he will be unable to share his opulence after victory. This is a typical calculation of material life. The transcendental life is, however, different. Since a devotee wants to satisfy the desires of the Lord, he can, Lord willing. शिकागो में आज का वेदर आज 20 अक्टूबर है और वेदर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है। ये नव्या के स्कूल का पार्किंग, ये स्कूल का पार्क, और मैं घर पे लंच बना के आई हूँ। और अभी 11:25 हुए हैं, 11:30 में 5 मिनट बाकी। और देखो फूल पत्ते कितने सब गिर गए हैं ना, फूल हो, क्योंकि अभी फूल बस उसके अंतिम चरण पे है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 10 डिग्री सेल्सियस में आप समझ सकते हो कितना ठंडा होगा।
और ये पार्किंग है जहाँ पे मैंने कार पार्क की है। और अभी बस ये लाइब्रेरी का है बिल्डिंग, ये नव्या की स्कूल का है जिसके अंदर जिम्नास्टिक है, जिसमें नव्या बहुत ही एंजॉय करती है, राइट? I love gymnastics. या नव्या लव जिम्नास्टिक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो धरा यूएसए ब्लॉग्स की मैं होस्ट हूँ। मेरा नाम धरा है, मेरी डॉटर का नाम क्या है? नव्या है। और इसी चैनल पे मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आती रहती हूँ, भारतीयों की लाइफ, भारत के बाहर और अमेरिका की किस तरह की पूरी सिस्टम है, पब्लिक सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके स्कूल, और भारतीयों की फैमिली लाइफ किस तरह से होती है। तो प्लीज़ अभी तक अपना ये वीडियो लाइक नहीं किया, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। और अभी हम चलो फिर नव्या की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू नव्या। तो नव्या अभी जिम्नास्टिक में है और मैं लाइब्रेरी के अंदर हूँ। तो मैं थोड़ा बहुत अपना वर्क करूँगी, स्टडी करूँगी, यूट्यूब के अमुक वीडियो शॉर्ट्स एडिट करूँगी, और आज का वीडियो भी हो सकता है तो एडिट कर लूँगी। अभी नवरात्रि चल रही है, 6th डे है नवरात्रि का, छठू नोरतु से। तो आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामना नवरात्रि की। और बाहर का वेदर तो आपने देखा ही। तो नव्या भी जिम्नास्टिक में है अंदर क्लास में, पहले उसको थोड़ा स्नैक्स ब्रेक होता है नाश्ते का, फिर उसका सब जिम्नास्टिक एथलेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होगी। तो देखो ये स्कूल की लाइब्रेरी है। मेक अ डिफरेंस इन योर चाइल्ड्स। तो यहाँ पे पूरा वो इंफॉर्मेशन दिया गया होता है। लाइब्रेरी का अपस्टेयर है, नीचे चिल्ड्रन एरिया है। मैंने ये ली है बुक नव्या के लिए। डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी बहुत यहाँ पे विंटर में होती है, तो आप आराम से आपका समय लेके बच्चे के साथ यहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए आ सकते हो। और यहाँ पे लाइब्रेरी में वाईफाई भी फ्री होता है। सो इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल फर्निश्ड एंड वेल इक्विप्ड विथ सो मच लाइक इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के साथ सभी तरह की बुक। यहाँ पे मीटिंग रूम है, ऑफिस जो कि वर्क फ्रॉम होम होते हैं वो भी यहाँ पे रूम बुक करके काम कर सकते हैं अपना। मेरे प्रीवियस चैनल पे मैंने यहीं पे लाइक आपको वीडियो भी बना यहाँ पे बात की थी, लाइव सेशन भी किया था।